Hello everyone, this is Tusar and today we are going to discuss the integrated rate equation for first order kinetics. Integrated rate equation for first order kinetics. First order kinetics. Integrated rate equation for first order kinetics. So let me define first what is first order reaction. What is first order reactions? The reaction in which the rate of the reaction is directly proportional to the reaction in which the rate of the reaction is directly proportional to the concentration of reactant is called first order reaction. Example is 2N2O5 gives rise to 4NO2 plus O2. Rate of reaction R equal to ROR. Rate of reaction equal to small r is equal to K into N2O5 to the power 1. ये 2 हवनी आम रेट लो लिखुचे ये 2 हवनी कोएफिशिएंट 2 अछि 2 हवनी because this is the experimental findings. Experimentally केवल हम फाइंड करि बारे एटा 1 हबो एटा मन रखियो पड़ो. This is an example of first order reactions. Next is derivation of first order kinetics. Derivation consider a chemical reaction of type A gives rise to product. A gives rise to product. Let at time t equal to 0 the concentration of A is small a and the concentration of product is 0. At time t
t equal to 0 at time t let the concentration of A is A minus x. जेतले टाइम 0 थिला सपोज द कंसंट्रेशन A रो केते थिला स्मॉल a थिला प्रोडक्ट बाहर थिला 0 जेतले टाइम t हे गला A minus x अछि थिला A वर्तमान अछि ना प्रेजेंट करंट कंसंट्रेशन होचे A minus x तले फॉर्मेशन हेथियो केते A थिला वर्तमान A minus x अछि तले फॉर्मेशन हेथियो x फॉर्मेशन है A थिला x फॉर्मेशन हे गला रहिला केते A minus x at time t equal to 0 concentration of reactant is A, concentration of product is 0. At time t concentration of reactant is A minus x and concentration of product is x. Now according to law of rate law, dx by dt, rate of the reaction ROR, rate of the reaction is proportional to concentration of the reactant A minus x to the power 1 because it is a first order reaction. Rate of the reaction is directly proportional to A minus x to the power 1 implies ROR पय हम लिखि परिबा dx by dt प्रोडक्ट टर्म ने जदि लिखिबी d एटा प्रोडक्ट की अछि x अछि रिएक्टेंट की A minus x अछि मु जदि लिखि परिबी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट टर्म रे भी लिखि परिबी dx by dt प्लस dx by dt माइनस अपन कान एटा प्रोडक्ट प्लस dx by dt proportional to A minus x to the power 1 implies dx by A minus x proportionally symbol को हटेबा dx by dt equal to k into A minus x equal to k into A minus x where k is the rate constant or velocity constant or specific reaction rate implies dx by A minus x equal to dx by A minus x equal to k into dt. हमारे क्वेश्चन के देला dx by A minus x equal to k dt. Now लिखि परिबा integrating both the sides we have dx by A minus x equal to k dt रो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बाहर को आसिला dt रो इंटीग्रेशन implies dx by A minus x रो इंटीग्रेशन होबा minus ln A minus x ए डेरिवेटिव पढ़ला पर एटा क्लियर हे जो minus ln A minus x केमती हला इक्वल k into dt रो इंटीग्रेशन हो t plus c लिखिया पड़े where c is known as integrating constant where c is the integrating constant एटा सपोज एटा हो इक्वेशन 1 next होबो at t equal to 0 next लिखबा हमें at t equal to 0 जतले टाइम टा t टा जतले 0 होबो x टा केते होबो प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन हि नथबो सो x भी 0 होबो at t equal to 0 x equal to 0 now putting these values in equation 1 we have c equal to minus ln a जदि हमें t0 x0 इक्वेशन 1 में पुट करिया t0 पकेले एटा कैंसिल हे जो एट रहबो c एटी x0 पकेले एटा जो minus ln a c will become minus ln a now again putting the value of c in equation 1 we have again putting the value of c in equation 1 we have minus ln a minus x equal to kt plus c sorry minus ln kt plus c c पई हम पकोचे minus ln a तडा जो minus ln a
हम ln a टाको एपटू नै जा हे जीवो ln a minus ln a minus x equal to kt implies ln a by a minus x equal to kt. Now we can write kt equal to k equal to 1 by t ln a by a minus x. हमें ln टाको लिखिबा 2.303 log हमें लिखि परिबा ए भलिया k equal to ln टाको लिखिबा 2.303 log तले एटा हे जिवो 2.303 by t log a by a minus x. This will be the equation 2. Sorry, here a is the initial concentration of reactant, a minus x is the final concentration of reactant, t is the time, and k is the rate constant, velocity constant, or specific reaction rate. And the equation 2 here represents the integrated rate equation or kinetics, integrated rate equation or kinetics for first order reactions. So it is the integrated rate equation or kinetics for first order reactions. Now next is half-life period for first order reaction. Half-life period for first order reaction. Half-life period. Again consider the same reactions. A gives rise to product. A gives rise to product. At a t equal to 0, at time t equal to 0, concentration of A is small a and product is 0. At time t equal to t half, जेतले t टा आधा टाइम हे जो. So first let me define what is half life period. Half life period is the time required for half of the completion of the reaction. जो गोटे रिएक्शन आधा सरिया पई जो टाइम रिक्वायर्ड हुए ताको हमें कहूचे हाफ लाइफ पीरियड. ताले t equal to t half means reaction आधा टाइम. ताले t half here t half represents the half life period. t टा जतले हाफ लाइफ पीरियड हबो ए कंसंट्रेशन टा केते आधा सरी जीवो. सेठी थिला a x, एठी a x टा केते जीवो a/2 हे जीवो. आगुर केते थिला a x थिला, ए a x टा आधा हे जो कार यार आधा हे जो. ताले a x टा हे जो a/2, a x टा हे जो a/2. एठी थिला x टा भी आधा फॉर्मेशन हेतियो. रिएक्टेंट जति कि नैथिले रिएक्टेंट रो आधा प्रोडक्ट को कन्वर्ट हे जाइथियो. ताले ए जो प्रोडक्ट टा फॉर्मेशन हिची से रिएक्टेंट रो आधा हेतियो. x equal to a/2. एठु जति देखियो एठी x बाहर जो केते, एठु जति फाइंड करियो x टा भी a/2 बाहर जो. सेठी कोन थिला आगुर a/2 नथिला, एठी भी a/2 नथिला. t थिला टाइम, t हाफ भी नथिला, a x थिला आ खाली x थिला. एबे जत t हाफ हे गेला, टाइम आधा हे गेला, ए जो a x टा जो कंसंट्रेशन रिमेनिंग रहिबो से रिएक्टेंट रो हाफ रहिबो a/2. a x is the half of the a/2. ताले a/2 हे गेला हाफ ऑफ a, दैट इज a/2. ताले x टा केते हे जिवो, x टा जो बाहरिबो प्रोडक्ट टा फॉर्मेशन हबो, प्रोडक्ट टा रिएक्टेंट रो आधा फॉर्मेशन हबो, x equal to a/2. So now according to
फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिखिया पड़े अकॉर्डिंग टू फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स k इक्वल टू 2.303 by t log a by a minus x ये थिला implies k equal to 2.303 by t 2.303 by t half पके दो एटी टाइम टाइम हाफ लाइफ पीरियड बाहर कोचे t टा t half नबा t टा जले t half हबो a minus x टा केते हबो a minus x टा a by 2 हबो ताले log a को log a रहला log a को log a रहला a minus x पई पुट करि परिबी a by 2 या हबो implies एटी जे t half बाहर करबी केडा तळु आसीबो t half equal to 2.303 by k log a by 2 केते हिजो 2 हिजो log 2 हिजो implies t half equal to 2.303 into log 2 रो वैल्यू होची 0.301 divided by k. This will become t half equal to 0.693 by k. This is the equation 3. Here equation 3 represents the half-life period for first order reaction. Here t half is the half-life period and k is the rate constant, velocity constant or specific reaction rate. Next is characteristics of first order reaction. Characteristics of first order reaction. First point is it must obey the first order kinetics. It must obey the first order kinetics. ये जेहेतु first order reaction ताले first order kinetics को obey करियो that is it must obey the equation k equal to 2.303 by t log a by a minus x ये equation को ये obey करियो. Next point होजी हम जानी जे first order reaction ना rate of the reaction directly proportional to concentration of the reactant. Rate of the reaction that is ROR is directly proportional to concentration of reactant. गोटे ग्राफ करि परिबा यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची concentration reactant सहित रेट ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सहित ना concentration of the reactant सहित रेट नेले concentration of the reactant को नेले तळे नै गेले x axis रे concentration ताले कोन directly proportional. Rate is directly proportional to the concentration of the reactant, so the nature of graph will be like this. Straight line starting from origin, will be like this is the nature of the graph. Third point will be half life period. हम जानिथिल इक्वेशन कोन थिला half life period is independent upon the initial concentration of the reactant. Half life period is independent upon concentration of the reactant, that is t half equal to 0.693 by k. From this equation it is clear that t half is independent of concentration of the reactant. जो half life period टा first order reaction पई concentration ऊपर डिपेंड करनी, reactant रो concentration ऊपर डिपेंड करनी, जोटा को हम इक्वेशन नु ही जणा पडुची. ताले एटी गोटे ग्राफ हम करि परिबा concentration t half ने भी concentration टा तळे नेली concentration half life period x y axis रे नेली independent माने nature of graph will be like this parallel है जो half life period is independent upon concentration of the reactant. Last point
for first order reaction the unit of rate constant k is equal to second inverse, that is for first order reaction the unit of k is independent upon the concentration of the reactant. The half-life period is independent upon the concentration of unit of k is independent upon the molar concentration term. Extremely sorry. It is independent upon the molar concentration terms. The second inverse rows unit of k, it mole or liter किसी term रहूनी, so we can say for first order reaction the unit of k is independent upon molar concentration term, that is second inverse. Unit होची second inverse. हम बाहर करथले ए बळा जनरल फार्मूला नेतले मोल टू द पावर 1 minus n liter to the power n minus 1 second inverse. ताले जदी n का जदी 1 नेबी फर्स्ट ऑर्डर पई एटा 1 हे जिवो, एटा भी 1 हे जिवो, 1 minus 1 0 मोल टू द पावर 0 टा 1 हे जिवो, liter to the power 0 1 हे जिवो, रहियो गते second inverse. I got it. Let me discuss a one mark question. Which among the following equation represents the kinetics for first order reaction. Kinetics for first order reaction. Option A is A equal to e to the power kt a naught, B A equal to e to the power minus kt into a naught, C k equal to 2.303 by t log a naught by a, D is k equal to 1 by t ln a naught by a. So पचार जी which among the following ए जो चारटा इक्वेशन दिया छि ए इक्वेशन नु चारटा इक्वेशन नु कोडा होची फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नो गोटे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इंडिकेट करूची कोटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नो गोटे इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन which among the following represents the kinetics for first order reaction माने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कोटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पाई त हम फास्ट जीवा पड़ियो मु त हमें नेइथिले हम बाहर करथिले आंसर के थिला
2.303 by t log a by a minus x या थिला हमरा implies that 2.303 by t मु लिखि परबी याकू log ए बळे तो इक्वेशन नाही एठी ए बळे इक्वेशन अछि कि एठी a नॉट आ a रे देछि तले हमें ए टा को नबा एटा हला हमें देखि जे से जो मॉडल देइथली मु ए टा थिला मॉडल टा कोन थिला a gives rise to product एटा थिला a एटा थिला 0 एटा a minus x एटा थिला x मते गो ए टा होची इनिशियल कंसंट्रेशन एटी a minus x हला फाइनल कंसंट्रेशन a टा को नेली इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज a नॉट final concentration a minus x is the final concentration that is a sorry a टा होची initial concentration a minus x होची final concentration we have to change the question a by a not এটা भी a by a not या क्वेश्चन अछि a by a not अछि हला तले हमें नै गले a पाइ नै गले एटा हला इनिशियल कंसंट्रेशन a not नेली a minus x फाइनल कंसंट्रेशन ताको a नेली ए हमें लिख परिबा तले इक्वेशन टा चेंज हे गला 2.303 t 2.303 by t log a not by a तापर हबो देखो एटा को 2.303 log टा को ln लिख परिबी 1 by t ln a not by a तले केटा ती बाला एठी अछि को 1 by t ln a by a not एटा तो भूल हे गला ताले k इक्वल टू बाहर छी 1 by t ln a not by a एठी अछि k इक्वल टू 1 by t ln a by a not अछि उल्टा अछि एटा भूल हे गला आ तीनटा भितरु देखिया कोडा करेक्ट अछि तमको a रो वैल्यू बाहर करियो पड़ियो एटा देखो 2.303 by t log a not by a एठी अछि ना नै k इक्वल टू 2.303 by t log a not by a एटु कोन अछि 2.303 by t log a by a not अछि एटा भी भूल हे गला तले ए दुटा भितर हम देखिया कोडा करेक्ट तो एठी कोन बाहर कराई छि a रो कंसंट्रेशन बाहर कराई छि हमको एठी a रो कंसंट्रेशन बाहर करियो पड़ियो एटा केमती होबो k इक्वल टू 1 by t ln टा को लिखबा log base e हमें ln को log base e भी लिख परिबा सो a not by कोन अछि ए अछि आज इट इज रहिला बुझेला तो एटा हे जो kt implies log base e a not by a equal to kt मुझे देठी a not by a रो वैल्यू बाहर करिवि a not by a यदि मु फाइंड करिवि यार वैल्यू एटा जो e टू द पावर kt जदी a by a not करिवि एटा रिवर्स हे जिवो a by a not ता केते होबो a by a not ता केते हे जिवो 1 by e to the power kt 1 by e to the power kt टा कोन e to the power minus kt तले एठू a केते बाहर जिवो a equal to e to the power minus kt into a not एटा को मन रखि देले भी बहुत सुविधा हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टा आइदर तो देथो k equal to 2 देखो एती बाहर गेला आंसर देखो a equal to e to the power minus kt a not a equal to e to the power minus kt a not एटा होचे प्लस kt एटा भूल हे गेला तले ठीक हैला कोडा एटा तले हमर एटा हला आंसर एटा हला ठीक आंसर इज द बी हमें पढिथिले k equal to 2.303 by t log a by a minus x एटा हला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस सबडु भलो होबो जदि हमें मन रखि परिबा एटा ए दीटा को मन रखिया पड़ियो a equal to e to the power minus kt a equal to e to the power minus kt into a naught this is also the integrated rate equation for first order reaction जदि एटा मन न रखिया जदि एटा मन न रखे एई भले हमें बाहर करिया पड़ियो ए इक्वेशन रो ए2 ए इक्वेशन नै गेले एठी
एठू हमें डिराइव करिया पड़े a इक्वल टू v टू द माइनस kt a नॉट जोटा कि बहुत टाइम टेबल. So this is all about today lectures. Thank you all. जय जगन्नाथ.